अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या? इसमें है, इसमें ब्रॉड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। दपा फेल से डेराइव गसान नाउन यमन छ वना मुश्तक़ात। मुश्तक़ुन गो डेराइव गस इश्तक़ा गो डेराइव गसन। मुश्तक़ुन गो what is derived from a fail. So there are mushtaqat. Mushtaqat are derived nouns from fail. Hmm? For fail, sulasi. Sulasi क्या वो? So just to round up what sulasi is. अच्छा, अगर कहाँ fail छो, अगर रूटस में आसन त्रे लेटर अशोना fail sulasi. अगर रूटस में आसन सुवर आस्के शोना fail रुबाई. रुबाई. अगर आसन only three in the mazi, then it's called mujarrad. अगर आसन three ज़्यादा तेल शासना मजीद. ठीक. It has four letters in mazi. It has five letters in mazi. Six letters in mazi. Almost 90% of fails. ठीक. Example of fail sulasi is suppose nazala. माजी मतलब माजी मतलब nazala पास. ला पास पास में कितने हैं इसमें लेटर? तीन। सुलासी कौन? हम्म. सुलासी तो वही है ना, थ्री लेटर जिसको मास मज। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ. थ्री अब लेटर्स. तुम माजी. आप मजीद बोल दो। मैं भी बोल रहा हूँ माजी. मैं भी बोल रहा हूँ sulasi मुजर्रद. थ्री लेटर अगर माजी में होंगे, नाज़ला में थ्री लेटर है माजी में, तो it gives it two properties. One property is this is from pure solasi. Okay? It has three in the root: noon, za, and lam. Three letters in the root, so it is pure solasi. And it has only three letters in the mazi: one, two, three. So this is mujarrad. This is this category. Okay. Now there's another category, that is nazzala. It has again roots what? Noon, za, and lam.
But how many letters does it have? It has 1, 2, 3, and 4. So this is fail Sulasi because it has 3 in the root. But it is not Mujarrad. This is Mazid. मजीद फी होगा उसमें ज्यादती की गई है उसमें ऐड किया गया है एडेड इन इट मजीद फी ही को एडेड इन इट तो व्हाट हैज बीन एडेड इन इट इसमें जा एक ऐड हुआ है कहाँ पे आइन कलिमा को 2 बार लाया गया है हाँ तो दिस इज मजीद फी ठीक so this is a specific form this is called form 2 of fail solasi we are still in fail solasi this area here this all area here इस एरिया में we are now going into this thing. Depending on where you add the extra letter or letters, it gives it different forms. This is always called form 1. What is it called? Form 1. This is called, depending on where you add the extra letters. Okay. So, uh, it's, ठीक है तो ये वाक्य में ठीक अच्छा depending on where you add this extra letter okay so it can take various forms if you add I in kalma twice it becomes fa'ala fa'ala this is called form 2 okay if you add fa ain to lam suna if you add alif after fa it becomes form 3 ये है ना नाम ना ये फेल है fa'ala नाउन में फाइलुन होता है पीछे ये नाउन नहीं है ये फेल if you add hamzatul qata in front of the fail this is fa kalma ain kalma lam kalma इसके स्टार्ट में हम लगाएंगे हमजा ये बनता है फॉर्म 4 क्या बनता है फॉर्म 4 देयर आर अदर फॉर्म्स आल्सो ठीक सो नाउ दिस इज this section what is this section this is when you are adding to the root so let me quickly very quickly revise what I said any fail you take the mazi form of that fail fail has three forms mazi muzariya amar take the mazi form for instance we will take darasa darasa because kataba does not have kataba yeah aktaba Mhm. Yes. The darasa means he studied उसने पढ़ा take fail mazi if it has three letters how many letters does it have it has three letters it has three letters Hmm? then this is fail solasi now the root of this thing is we know the root of this thing is dal ra sin so if this is coming from this root this fail is coming from this root then this is fail solasi or fail solasi okay? If the root has four letters like there is a word called harwala harwala go he rolled yeah it rolled
It has four in the root. Ha, ra, wow, and lam. This is a different class. This is called fi'l rubai. We are not studying this yet. At the end of the course, maybe. But majority of the course is on fi'l sulasi. Darasa. Darasa has three in the root. What are these three? Dal, ra, sin. Okay. Now there can be known letters that can be added to this fi'l sulasi at known positions. Suppose if we add this ra kalima twice, this becomes the rasa. So this ra is added twice. So now this is not okay. This was called fi'l sulasi mujarrad. Mujarrad हो गया खालिस. Sa mujarrad. Now this is not mujarrad. This is now mazid because we have mazid को add करना. ज़्यादती अपने को मुझे. Yakke kurus add. Yakke kurus ra kalima add. Ain kalima kurus add. Ra we brought twice. Okay. At known position. Which position? At middle position. Okay. So this changes its form. It becomes form 2. The meaning slightly changes. Okay. Similarly, if we say darasa, what did we add? We added alif after ha kalima. So this changes to form 3. If we take this and add hamza at the beginning, adarasa, this does not mean anything. This does not mean anything. Right now, I'm just teaching you the forms. If we take adarasa, okay, so this is form 4. All fails don't have all forms, but all fails have some of these forms. ठीक जैसे darasa has darasa, but it does not have darasa. It does not have adrasa. ठीक nazala has nazala. It has nazala form 2. It has anzala also. Anzala, we'll get to that later. Meaning we'll get it. Okay, so understand the form. Okay, so now we are concentrating right now on what I'm going to say next. I'm concentrating on fi'l sulasi magar mujarrad. Mujarrad means darasa. 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 Darasa masidasan, this is a fi'l. Fi'l क्या हो गया जिसमें काम हो. There are derived nouns from this. ठीक. So the common nouns that are derived from this is fa'il. Fa'ilun. That means the one who is doing this work. So this will become darisun. Darisun हो गया जो पढ़ रहा हो. ठीक. Then there is maf'ulun. मफऊलुन. मफऊलुन हो गया जिस पे काम हो रहा होगा. वो क्या बनेगा? मदरूसुन. मदरूसुन हो गया वो जैसे बुक या दर्स जिसको पढ़ा जाएगा. मदरूसुन. ठीक. इसके बाद है मसदर. इसका वो भी होता है एक फेल. दरसुन. दरसुन इसका मसदर है. मसदर हो गया सोर्स. ठीक. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. दरसुन हो गया लेसन. तो दारिसुन reads a madrusun and the act is called darsun. ठीक. अच्छा. उसके बाद होता है जिस जगह पे ये काम किया जाए और जिस टाइम पे ये काम किया जाए उनको बोलते हैं इस्मु मकानिन और इस्मु जमानिन. उस जमाने का काम, उस टाइम का नाम जिस टाइम पे ये फेल हो रहा होगा, और उस जगह का नाम जिस जगह पे ये फेल हो रहा होगा. ठीक. अच्छा. इसको कैसे करते हैं हम? इसको बनाना होता है मुजारिह. जैसे ये है दरसा. ठीक. या सपोज जलसा लेंगे. जलसा यजलिसु. यजलिसु. इसमें क्या है? जीर. तो ये बनेगा मजलिसुन. इसका वजन है मफअलुन या मफइलुन. इस पे गौर करो आप. इसका वजन है मफअलुन या मफइलुन. दोनों में से एक.
कि अल होगा या इल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है डिपेंड मुजारिया में इस आइन कलमा पे क्या है। यहाँ पे जीर है इसलिए ये बनेगा मफइलुन, ये बनेगा मजलिस। मजलिस के अब दो मीनिंग्स हैं, एक हो गया टाइम ऑफ गैदरिंग, दूसरा हो गया प्लेस ऑफ गैदरिंग। ठीक, टाइम ऑफ गैदरिंग मजलिस और प्लेस ऑफ गैदरिंग। अब which one is kashir poet? Yeah, अच्छे मजलिस, that means people are sitting there. It's a place of sitting of people. ठीक। हम्म, आपको समझ नहीं आया, आई ट्राई अगेन। फेल से बहुत सारे नाउन निकलते हैं, वो होते हैं नेम्स ऑफ वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू दैट फेयर। ठीक, out of these nouns there are two nouns, that is the time when this fair is being done and the place at this fair is being done। अगर कहीं पे कत्ल हो गया, उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पे कत्ल हुआ होगा? हम्म, spot of murder, yeah, can't one of it, it's a long name but it has a smaller name with respect to the act। ठीक, कतला उसको बोलते हैं कतला यक्तुलु। या सपोज फतह यफ्तहु, मफ्तह, अगर one मफ्तह, मफ्तह means the time at which the opening happened or the place at which the opening happened। मक्तल, मक्तल means the place, मक्तलुन, मक्तलुन, कतला यक्तुलु, अगर पेश होगा या जबर होगी तो ये आएगा मफअलु, अगर जीर होगी तो आएगा मफइलुन। ठीक, कतला यक्तुलु इसमें पेश है ना तो आएगा मफअलुन, मक्तलुन। मक्तल क्या बोलते हैं? मक्तल हो गया, ये बोलते भी, मतलब आई हर्ड इट, आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव हर्ड इट। मक्तल मीन द प्लेस वेयर द killing happened or the time। मक्तूल को मफऊल was not spelled, the one who was killed। कातिलुन, फाइलुन was not spelled। दोनों के लिए सेम वर्ड यूज। दोनों में नीचे ठीक, सेम वर्ड किसने यूज, प्लेस एंड टाइम? ना होती यूज तो होती, हाँ। ठीक, ओके। अच्छा ये बेका फेल टू मकतब, मकतब से नहीं सोना, कतबा यक्तुबु, मकतबुन, मकतब is the time when writing is done or the place where the writing is done। अब सोना क्या, टाइम और प्लेस ऑफ राइटिंग, आज के सोना मकतब। ठीक, अच्छा, so these are the af'al, these are the asma related to fi'l, these are called mushtaqat, derivatives from fi'l, huh? These are important। Today we did derivatives from form 1, form 2 has similar derivatives, so we'll touch them when we'll go to form 2। ठीक, and you see that majority of the words that we use in Arabic or what we read, these are actually derived from these fi'ls। We already know the fi'ls, our vocabulary alhamdulillah is increasing, we are beginning to know more and more af'al। So if we now understand the similar rule of how asma are derived from the fi'ls, what is ism fa'il, what is ism maf'ul, what is ism zaman, what is ism makan, so if we learn one fi'l we'll learn 10 to 20 words from this automatically। this is like math। so now we are going to improve or enrich our vocabulary by understanding what asmas are derived from fi'ls based on what rules। You learn the rule, you learn all the words that come with that rule। ठीक है, that is the idea। Okay, चलो इस पको ब्रोट इस पर वो होत्र हो रहा है तामल मायगी, हमजतुल अमर, हमजतुल वासल। अच्छा अच्छा इस वाला वही इस नहीं वाला लिखने क्या, चलो तामल मायगी अशकल मनी। ponder over the following। Uktubid darsa, so he is, what is he doing? He is using this zir, ठीक, to join the amr and the noun। ये हमने पढ़ा। अगर ये जीर या दिमोनी की नहीं, या इस बाग की साउंड जो है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो रूल है कि इल्तिकाई साकिनैन, when two sakins meet the first one is dropped। so there are three sakins that are meeting here, ba, alif and lam। so if we read this using that rule, this will become uktud darsa,
uktu darsa. So the sound of ba is completely getting ignored. For that reason, ba is giving a pseudo zir, kasra. Pseudo हो गया नकली, नकली कसरा इसको दी जाती है ताकि we can preserve its sound when we are reading. So we'll say uktu bid darsa, iqra il qur'ana, ishra bil qahwata il bil ana. हाँ, या हामिद दुक्तुब, हाँ अच्छा उक्तुब, एक ही पता चलेगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर। ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता कॉन्टेक्स्ट। है। अच्छा क्लोज द डोर, हाँ प्लीज क्लोज द डोर। सी मैं ठीक। इसको वर्ड लगाता ना, हूँ। There's no word for please. उक्तुब, उक्तुब में क्या है, यहाँ ये हमजतुल वस्ल है, जब इसके आगे कुछ आएगा तो ये एजेंडेट हो जाएगा। या हामिदुक्तुब, ये अलिफ नहीं पढ़ा हमने यहाँ पे। इजलिस, अच्छा इजलिस में क्या है, इजलिस में ये इधर वजलिस आएगा, वाव जब इसके सामने आया तो ये हमजतुल वस्ल नहीं पढ़ा गया। दिस आर टू रूल, दिस वन रूल, दिस इज अनदर रूल। ठीक है, ये हमने किया था। अब नेक्स्ट करेंगे, इकरा मायदी, रीड द फॉलोइंग, मरायन, कीपिंग इन व्यू या रियायत करते हुए, कवाइदा नुत्क़ी, बोलने के कवायद। ये बोलने के कवायद है जो हम अब पढ़ रहे हैं ना, ये बोलने के हैं, ये लिखने के नहीं है। रिटन विद सुकून, बट बोलने के टाइम पे हम इसको क्या देते हैं, जीर। इसीलिए बोलता है कवायद, रूल्स ऑफ नुत्क़ सेम। हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल को बोलने के रूल्स आप रखो किसमें, ध्यान में। व कवाइद नुत्क़िल हुरूफ़ साकिन, और जो रूल्स है नुत्क़, नुत्क़ हर्फ, हर्फ साकिन, हर्फ साकिन हो गया यही, कौन सा वाला, ये हर्फ साकिन। इन द मा यही, हाँ, इन द व्हेनेवर देयर इज अलिफ लाम। ठीक, अच्छा क्या शो होना ये, कुल व शरीब, कुल हो गया खाओ, व शरीब हो गया पियो। इसने क्या किया यहाँ पे, इसने ये लाया, ये हमजतुल वस्ल यहाँ, इसके सामने लाया वाव। नाउ ही एक्सपेक्ट्स अस टू रीड दिस एज वशरिब एंड नॉट व अशरिब। ठीक, आपको भी यही करना है। चलो मुना पढ़ो। ठीक है, इकरा दरसा व वफहिमहु, फहिमा यफहमु, वफ हमहु। वफहम, Read the dars and memorize it. and Memorize it. understand. Understand. So what did you change? Ikra il. You- Ikra id dars. You gave a zero here, huh? There I did not read the. You did not read the Hamzatul Wasl. And Mariam, read. Ikra waqtu. What did you change? Then alhamdulillah. कुछ मैंने क्या किया? Hamzatul Wasl you did not read, huh? Okay, very good. और सिमसा तुम पढ़ियो? اخرج اخرج والأب. कैसे करूँ मैंने? والأب اسمز गो हमज़तुल वस्ल आइतस यूज. वो हाँ। अच्छा नेक्स्ट को रबी ला पढ़ो। इज़हबिल आना इसका मीनिंग वर्जिआ, फोर्थ का फोर्थ का मीनिंग है उखरुज हो गया निकलो, खराजा यखरुज में से अमल बनता है उखरुज। एक सेकंड, उखरुज, खराजा, खराजा वो ही एग्जिटेड, यखरुजु, यखरुजु क्या वो ही लीव्स, हाँ। यहाँ से एक सेगा होता है तखरुजु, तखरुजु यू आर लीविंग, हाँ, यू आर एग्जिटिंग। इससे बनता है अमर, तखरुज से। कैसे बनता है, ये गिरता है और इसमें लगता है सुकून, ये बनता है ऐसे। फिर इसमें लगाते हैं पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल आ गए। अब सवाल आता है उस हमज़तुल वस्ल पे दबर जीर देंगे कि पेश देंगे। ठीक, ये डिपेंड करता है इस पे। अगर इस पे होगा ज़बर या पेश तो इसमें लगता है पेश, अगर इस पे होगी जीर तो इसमें लगती है जीर। यहाँ पे इस पे क्या है, दम्मा, पेश, तो इसमें आगे लग गया क्या, दम्मा। ये बन गया उखरुज, उखरुज हो गया अमर। हाँ, वो इसका मतलब क्या हो गया, लीव, निकलो।
उखरुज वल अब लईबा यल अब हो गया ही प्लेड। इससे बनता है इल अब हो गया प्ले। उखरुज लीव एंड प्ले, निकलो और खेलो। हाँ रबील पढ़ो। इज़हबिल आना वर्जिअ इज़हब बादस सुलसी साअतिन। Go now and come back after a third of an hour. 1/3 ऑफ एन आवर। हाँ इज़हबिल आना, ये तशजीर है। इज़हबिल आना वर्जि यज़कुरी हमज़तुल वस्ल क्या एजेंडेट वर्जि बाद सुलूसी साअतिन आफ्टर 1/3 ऑफ द आवर। ठीक। अच्छा पैकेज जी आप पढ़ो। या बसमा अखबार ओपन द हम्म, ये क्या है इसका क्या मीनिंग है? मिज़िया मिज़िया इफ इज़ा अतुन ज़ातुन ने चैनल अच्छा अच्छा, मिज़ियागो रेडियो ओपन द रेडियो मैं एंड तो बोल रहा हूँ। लिसन टू द ठीक है। न्यूज। हाँ इफ्ताह اللي يعمل جزيرة يفتح. ها يعمل جزيرة بكل أسمبليتيات واسمع يواورا لو يسي نسو تولي واسمع واسمع يدس بي بغير واسمع الأخبار. ठीक है भी टच करो। خذ هذه الحقيبة وفتحها. Take this bag خذ and open it. هذه الحقيبة. حقيبة हम्म, خذ and open it. خذ فعل अमर क्या अमर से लगा का मफूल एस्पेक्ट पकड़ो इस बैग को इसलिए यह जबर खुद हाजिर हकीबत वफ्ताह हा इफ्ताह को ओपन वाव ये लगा उस पीछे ये रह गई याद से जोइन हम तो तुम असली बात नहीं किया वफ्ताह हा वफ्ताह हा एंड ओपन इट हा ठीक है याद है की बात। हाँ मन पड़। इज़हब इलल मुदीर वस्अलहु, go to the director and ask him. मैं पढ़ो। हजिल खुश खुजिल तो ये थे ना। हाँ हाँ खुजिल हम्म खूबा ला खुजिल खूबा वगसिलहु वा ला वगसिलहु और से लो और take the glass. वेरी गुड मुझे तो करेंगे। قال الله تعالى ليحيى عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب قال الله بقوة. تعالى قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. अच्छा हाँ हाँ ठीक। Allah Ta'ala said to Yahya alayhi salam, O Yahya, take this book with strength. किताब को कुव्वत से पकड़ो। ठीक पकड़ना मतलब stick to the rulings of the book, follow the book. नेक्स्ट पढ़ो। وقال تعالى لآدم عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
Allah said to Adam alayhi salam, O Adam, dwell you and your wife in paradise.